Welcome to my channel. So today we are here to I am here to explain you chapter number 1, how, when, where of history social. So let's start. I hope you will like it. So let's start. Before starting a topic, I want to all you know that what is history. So history is a certainly about the change that occur over the time. Means the change when occur over the time. So let's start the topic, how important are the dates are very much important in history because his dates are synonym with history. Without date there is no history. Dates are always compare the past with present because how can we know the changes is there. We Third point, that we continue to associate history with string of date. Yes, we totally continue the history to associate with a string of date because how can we know the importance? How can we know when the battle of Plassey was took? Everything was all. So I hope you will understand this topic. So and remember, history is the past. Thank you. I hope you have understand the first topic. Now the topic is which date. Dates were selected around the story of past. Means as we can say, dates were only selected on the basis of past. The historians began to rule of the when the British came. The first general was Vernon Hastings and last Marvorsey Lord Mountbatten. What is chronology? I ask you. Chronology is to set the event at correct days. Means when the Battle of Plassey was supposed to get 1798, but and Independence Day. So which date you will write first? Battle of Plassey or Battle of that called chronology to set the event at correct date. Selection of date depend upon story of part. Focusing upon the particular event is important. I hope you have understand the dates have lots of importance, and that's why it is synonym with history. Thank you. The next topic will be shared you. So our next topic is how do we periodize? So in according to James Mill, we will read this topic. In 1817, James Mill published massive 3-volume work. He divided the history in book that was Hindu, Muslim and British. मिल थॉट दैट जो एशियन सोसाइटीज़ होती थी वो लोअर लेवल का सिविलाइजेशन होता था उनमें यूरोप से, और वो इसलिए होता था कि हिंदू मुस्लिम लड़ते थे तो एक दूसरे से कास्ट टैबूज, रिलीजियस इंटरफेरेंस, लड़ाई झगड़ा रिलीजियस के मामले में ये सब चलता था, और इसलिए इंडिया या ब्रिटिश सिविलाइज नहीं है, बस ब्रिटिश ही इंडिया को सिविलाइज बना सकता था। मिल ऐसा होता था, और इन द फोर्स उन्हें रिप्रेजेंट किया कि इंडियन हिस्ट्री वॉज डिस्क्राइब बाय मॉडर्न, एंशियंट and medieval. I mean to say ancient, medieval and modern. Same as Hindu, ancient, Muslim, medieval and British modern. Okay. So our next topic is colonization. Means by reading this chapter you will understand how British came to India and conquered the country and established their rule by subjugating local नवाब्स and राजा. I mean to say ब्रिटिश कैसे इंडिया और इन्होंने लोकल नवाब को हटाकर, राजास को हटाकर अपनी जगह ले ली, अपनी कंट्री अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए वो यहाँ से सामान खरीदते थे और बाहर जाके बड़े बड़े दाम में बेचते थे. सो व्हाट इज colonization? Subjugating the one country, subjugating another country lead to change in political, economical and human beneficial is called as subjugation, as called as colonization. मतलब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से अपने फ़ायदे के लिए जब कोई सामान लेती है तो उसे colonization कहते हैं. I hope you have understand. The next topic is that. So administration produces records. So in this topic we will read about how do British preserve their record. British felt important document letter should be needed preserve. वो सोचते थे कि important document या कोई भी letter हो वो एकदम preserve रहना चाहिए, मतलब इंडियंस के हाथ और किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए. और उसके लिए उन्होंने स्पेशलाइज इंस्टीट्यूट बनाए, लाइक आर्चीव्स हुए, म्यूजियम्स हुए, वर established to preserve important document.
एडमिनिस्ट्रेशन वर्स दे कीप एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स से आज आरटी दफ्तर को पता चला है कि पिक्चर्स में भी देखा गया है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को कितने संभाल के रखते थे एंड दे कीप देयर डॉक्यूमेंट वेरी सेफ दैट एनीबडी कांट सी. So our next topic is survey become important. First of all, let us understand what is survey. Taking out the detail of anything, topography, soil fertility, flora, fauna or any local history is called as survey or making the report is called as survey. Survey मतलब वो होता है किसी एक चीज़ की जानकारी निकाल कर उसकी रिपोर्ट को तैयार करना एक सर्वे कहलाता है जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में वो चल रहा था. अर्ली 19th सेंचुरी से सर्वे कॉमन हो चुके थे जिसमें पूरे एंटायर कंट्री के मैप में सॉइल फर्टिलिटी टोपोग्राफी एवरीथिंग वाज कैरिड आउट. नंबर ऑफ हर 10 साल में एक सर्वे रिपोर्ट होती जिसमें कास्ट के बारे में पता चलता उसकी सीजन्स के बारे में उसकी टोपोग्राफी सॉइल फर्टिलिटी और पूरे इंडिया में और ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में यही चल रहा था. दैट्स व्हाई सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट. So our next topic is what officially record do not tell. Official record will not tell us anything. It can be record of diaries, people, account of pilgrimage and important personality. Because printing was introduced and newspaper was published and issued were debated in public. Leaders and reformer wrote said their ideas who wrote in their feeling. अब फॉर एग्जाम्पल ऑफिशियल रिकॉर्ड हमको इसलिए कुछ नहीं बताते थे जैसे पुलिस है पुलिस ऑलवेज टेल ट्रूथ एंड प्रैग्मेटिक न्यूज़ मीन्स करेक्ट न्यूज़ देगे बस बट न्यूज़पेपर ऑलवेज गिव द न्यूज़ टू अ न्यू वे दे एडिट इट एंड देयर टू टेयर करस्पॉन्डेंस. वो अपने आप हिसाब से देखते थे कि इस न्यूज़ में क्या क्या सच्चाई है उसको थोड़ा सा और अच्छे से इनकरेज कर कर न्यूज़पेपर पर छापते थे. दे कांट गिव अ सिंगल स्टेटमेंट लाइक पुलिस गिव. They have to add some masala and mirchi in that na I mean to say some content in that na that's why official record does not tell us anything. So this was the last topic of our explanation of chapter. This chapter is completed. So remember I like history because it's have lots of mystery. Thank you so much for listening my video. It's my first video. Please like and share it.